नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। प्रदीप जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम दोनों हैं एज यूजुअल नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ है हमेशा किसके साथ? आपके साथ, हमेशा आपके साथ। आज एक बड़ी दुखद खबर है। आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ। मोदी जी गांधीनगर गए, अपनी मां को कंधा दिया, जो भी उन्होंने करना था वो किया। और बिल्कुल बिल्कुल सरदार पटेल की तरह, याद रखें, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह फौरन वहां से निकले और एक बार फिर अपने काम पर लग गए। ये है नरेंद्र मोदी। याद रखें, सरदार पटेल जी, एक बार कहा जाता है हिंदुस्तान के, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल, द मैन हु एक्चुअली इंटीग्रेटेड ऑल द स्टेट्स फॉर अस। ये कहा जाता है कि सरदार पटेल एक बार कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे, ही वॉज आर्ग्यूइंग इन कोर्ट। उसी वक्त उनको एक टेलीग्राम मिला कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने वो टेलीग्राम अपनी जेब में रखा और आर्ग्यू करते रहे, अपने क्लाइंट को जितवाया और उसके बाद वापस घर गए। प्रदीप जी, बिल्कुल सर, I think Mr. Modi has inherited or has imbibed that work ethic, that ethic to work for the nation, where, जैसा मोदी जी खुद कहते हैं, ये मेरी माता है लेकिन भारत माता से बढ़कर और कोई नहीं है। मोदी जी एकदम फौरन गए, वापस गए और एकदम काम पर लग गए। प्रदीप जी सर, कर्म एक जो टिपिकल कर्मयोगी जो बोलते हैं भगवत गीता का, मोदी जी सब जगह भगवत गीता के बुक्स बांटते रहते हैं। तो कट्टर कर्मयोगी जो होता है, यू नो, नॉट अफेक्टेड बाय विन, लॉस, गेन, लॉस, पेन, प्लेजर, जो असली भगवत गीता में डिफाइन किया, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर मोदी इज। आई रिमेंबर व्हेन ही स्पोक टू अस, व्हेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उन्होंने कहा, मैं कभी जीवन में पाने के सपने नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ करने के सपने देखता हूं। पाने के ललक में असंतोष छुपा रहता है, करने के ललक में संतोष है। जहां संतोष है वहां आनंद है, जहां आनंद है वहां उमंग है, और बिना उमंग के क्या जीना। Any person who lives the life of a karma yogi, it comes out spontaneously, the spiritual aspects of life. This is with Mr. Modi. If you see, प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद पूरे दुनिया में, और स्पेशली पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी है, वहां के लोग जिस प्रकार से इनका एग्जाम्पल देकर लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, लीडरशिप कैसे होना चाहिए। बोले मोदी जी को देखो, प्राइम मिनिस्टर है मगर उनके घर में कोई बदलाव नहीं है, वही बूढ़ी माँ वहीं पर रहते हैं, उनके घर में छोटा सा घर है, अपने भाई वही छोटा सा घर में, छोटे छोटे ऑफिसर्स है, जूनियर ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट पंचायत जो भी है, देयर इज नो ऐसे उनके वर्ल्ड वाइड चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स नहीं खुला है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस ग्रुप से साथगांठ नहीं हुआ है। ही इज वेरी ही इज, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ ही इज। देखो, आज आए, मदर एक्सपायर्ड, आए, कंधे पे खुद लेके गए, कंधे से चलते चलते वहां पर कोई शोर शरार, देयर इज नथिंग व्हाट यू कॉल अ बिग। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर क्या होता है हिंदुस्तान में क्या होता है कि आदमी अगर छोटा सा कॉर्पोरेटर भी बन जाता है, एग्जैक्टली उसके बाद उसके सारे परिवार जो है, उसके सारे परिवार में न जाने कहां पर उद्योगपति पैदा हो जाते हैं एकदम। और जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, ना मोदी जी के घर बार में कोई बदलाव आया, ना मोदी जी में कोई बदलाव आया, ना मोदी जी के भाइयों में कोई बदलाव आया, और तो और छोड़िए, नॉटविथस्टैंडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज अगल बगल घूमते रहते हैं, whenever he's in US, he's with the top bankers, with the top industrialists. Sir, I still remember, we'll talk about that in just a little while. एक मिनट के बाद हम लोग उस चीज के बारे में बात करेंगे। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी ने आज तक कभी अपने भाइयों को, अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को आज तक कभी बढ़ावा नहीं दिया। ये उदाहरण जो है, बाय द वे, पाकिस्तानी चैनल जो हैं, अमेरिकी चैनल जो हैं, यूरोप के जो चैनल्स हैं, सब लोग देते हैं। That perhaps Mr. Modi happens to be one of the very few leaders who has never ever gone out of his way to try and help his family gain materially or otherwise from the fact that he is a second time prime minister of the country. और ये इसके एकदम बाद, फौरन बाद, मोदी जी just flagged off a train. Let's take a look. We should have that on for you in just a minute. We'll have it on
for you in just a minute. एकदम फ्यूनरल के बाद, अपनी माता जी की फ्यूनरल के बाद मोदी जी गए, उन्होंने एक नई रेलगाड़ी का इनॉग्रेशन किया. लेट्स टेक अ लुक एट दैट. इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं. इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है. आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है. आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं. आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा. और अभी अभी जो प्रदीप जी कह रहे थे, एडवोकेट प्रदीप नामियार साहब जो अभी अभी कह रहे थे कि ये इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनकी वजह से आज तक कभी इनके रिश्तेदारों को कोई फायदा नहीं मिला है. और एक और चीज बता दूं आपको, आज तक कभी इन्होंने अपने भाइयों को, अपने सगे वालों को आज तक कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में इनवाइट नहीं किया, आज तक कभी नहीं बुलाया है. मतलब इतनी बड़ी बात है प्रदीप जी. और दूसरी चीज क्या है कि जो मैं बात आपको बताने जा रहा था कि ये जब गए, यूएस जब गए थे, he met all the leading industrialists, the leading IT experts, the leading IT CEOs. Quite a few of them are Indians, by the way. But he also went to the Facebook campus, where he had a long interaction at the amphitheater of the Facebook campus with Mark Zuckerberg, where there were a lot of other young people sitting over there. अपनी माता जी के बारे में बात कर रहे थे, वही माता जी जिनको आज उन्होंने कंधा दिया है. और उन्होंने कहा कि जब ये छोटे हुआ करते थे, इनके पास पैसे नहीं थे. पिताजी का देहांत जो है बहुत पहले हो गया था, पैसे नहीं होते थे इनके पास, तो इनकी माता जी जो हैं लोगों के घरों में काम किया करती थी. घरों में क्या काम करती थी? बर्तन घिसना, ये सब करना. और मोदी जी भावुक हो गए, मोदी जी की आंखों से आंसू आ गए जब उन्होंने अपनी माँ के बारे में बात की और ये कहा कि मेरी माँ ने इस तरीके से हम सब लोगों को बड़ा किया. सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे सब भाइयों को, सब लोगों को, हम लोगों को मेरी माँ ने अपनी मेहनत से इस कदर ठीक ठाक बना दिया कि हम लोग अपना जीवन जो है वो बसर कर सकें. दैट्स व्हाट मोदी इज, बाय द वे. एंड ही डिड नॉट डू एनीथिंग. अब मोदी जी मतलब क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी के स्टाफ में से भी कोई फोन कर सकता है कि भाई प्रदीप जी, एग्जैक्टली कि ये फलां कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मेरे भाई के द्वारा दे दो, इसके द्वारा दे दो, उसके द्वारा दे दो. नेवर, not once has he done that. His life is totally, sir, आप देखोगे जो हम लोग से बातचीत जब when he spoke with the Chief Minister of Gujarat, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि he believed in the spiritual leadership of Mahatma Gandhi, very 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 clear, and still people, all the opposition flock around saying that they are the killers of Godse, Mahatma Gandhi, they are lovers of Godse. उन्होंने कहा कि whenever he talks about the spiritual aspects of life, he always said that he was inspired by Jatayu from रामायण. बोले कि वो जानता था कि रावण से वो जीत नहीं पाता था. He would never win with Ravan, but he fought him to protect righteousness. सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए जैसे जटायु ने अपने आप को त्याग किया. There are examples that he lives every day that speaks out in everything. Then he talks about the way collectivism. I mean collectively taking care. जो leadership के बोले श्री कृष्ण जैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, वो खुद उठा सकते थे, भगवान था, बट छोटे छोटे ग्वाल बालों को साथ में लेके उन सबको बोले कि आप भी अपने उंगली और कांटे से पर्वत को हाथ लगा दो. टू शो दैट कलेक्टिव, that I am not there. This is entire theme that is performing. So every aspect of life, he has been absolutely called a karma yogi, which he believes in the Bhagavad Gita, which he distributes everywhere. And ultimately he tells us how he would like people to point out the mistakes that he commits in life. He says, इससे मैं छोटा नहीं हो सकता. I am always enlightened by mistakes that people point out at me. It gives me an opportunity to redeem myself, reconcile and improve the service that I give to the nation. And ultimately he said that I am
I would like to be a small candle that shows light to the youth. Now the point is The over whole here. life, no, Pradeep what ji, I'm trying to, yes, yes. जी, वो कभी ने अपने आप को जो खानदानी उस बोल रहे हैं कि अपने जो whatever he was like, he didn't want to hide facts that he was a poor man. He never wanted to hide that his mother was working, as you said, as a domestic. as domestic help in other houses, that he himself used to sell tea. He was selling tea and taking tea to small. So as a child, he used to do that. Lend hand to his father, lend hand to his family. तो इन चीज में गर्व महसूस करता था. He was never hide. And जो even our पाकिस्तानी counterparts बोले कि हमारे यहाँ पर जो leaders है वो उनको लगता है कि खानदानियत में, I mean, जो हमारे जिस प्रकार से बोलते कि we are from this lineage, हम इस वंश से हैं, हमारा tracks, you can track on to the great people. Said nothing. Look at that man. Look at his leadership. That is democracy. Simple, humble. खुद कहता कि मैं चाय बेचता था, इससे बड़ा और कोई उदाहरण है. That's an inspiration to the entire nation. Compared to the leadership from here and there, he stands tall. He stands tall with his humble और प्रदीप जी, इनकी वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरे देश में बदलाव आया है, पूरी देश की सोच में बदलाव आया है. आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी चाय वाला, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, ऑटो चलाने वाला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री. Exactly. सबसे बड़ी बात यह है. Yes. और तो और छोड़िए, ममता बनर्जी को देख लीजिए. अगेन फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. Yes. शी इज द चीफ मिनिस्टर एंड शी हैज नेवर हिडन हर हम्बल बैकग्राउंड. आज भी बिल्कुल वैसी हवाई चप्पल पहनती हैं, वही 250 रुपए की साड़ी पहनती हैं. इसी प्रकार जहां तक एकनाथ शिंदे जी का प्रश्न है, वो यही बोलते हैं कि मेरे प्रेरणा स्रोत 3 हैं. बाला साहब ठाकरे, आनंद दिगे, ये तो है ही, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत और श्रद्धा केंद्र सिर्फ एक हैं. कौन? आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. नाउ दिस इज व्हाट डेडिकेशन इज ऑल अबाउट. दिस इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, द स्पिरिट ऑफ सोशल सर्विस, द स्पिरिट of nationalism is all about. And by the way, this man embodies that, and that's the reason why the opposition has not been able to attack him. Let's be very clear, because the opposition, look at where they're coming from. कोई जमींदार है, कोई लैंडेड जेंट्री से है, हर एक के पास मतलब ना जाने बचपन से आज तक उन्होंने फॉरेन कार के अलावा और एयर कंडीशन एग्जिस्टेंस के अलावा आज तक कभी कुछ देखा नहीं है. ये वो लोग हैं. और कहाँ है नरेंद्र मोदी? प्रदीप जी, और सामने देखिए नरेंद्र मोदी को. नरेंद्र मोदी वो शख्सियत जिसकी माँ घरों में बर्तन घिसा करती थी, चाय बेचा करते थे, और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और सिर्फ देश के ऊपर इनका ध्यान केंद्रित है. फोकस्ड ओनली ऑन नेशनल डेवलपमेंट एंड ऑन हिज जॉब. द मैन हैज नॉट टेकन इवन अ डे ऑफ टू मोर्न फॉर हिज मदर. एज ही सेज, माय मोर्निंग is my private mourning. It does not concern the nation. As far as the nation is concerned, nation is above everything else. देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है. I tell you what, Pradeep ji, let's take a look. He also talked about the metro today. Apart from flagging off a whole new transformation of the Indian railways, he's also talked about the metro. Can we have that on, please? I think we have it. We should have that on in just a minute. Mr. Narendra Modi, just after his mother's funeral, talking about the metro. एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टम है. कोलकाता के लोग जानते हैं कि दशकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना बेहतरीन माध्यम रही है. 2014 से पहले तक देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली एनसीआर की ही थी. केंद्र सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता हुआ है, उसको बदलने का पूरा प्रयास किया है, और बहुत तेजी से बदला है. And look at it today. It is only because of Mr. Modi's efforts and his push, Pradeep ji, that you've got a metro at the moment in Mumbai. Metro plan for Pune, metro plan for Nagpur, yes. And by the way, it actually started to work. The bullet train. Metro even in Patna, by the way. Sir, bullet train is one of the greatest. And bullet train, most importantly, we'll talk about the bullet train when we come to Yes. Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Eknath Shinde. Bilkul. But I tell you what, you were saying something about Mr. Modi. You wanted to say something about Mr. Modi before we started to talk about the metro.
उसके पहले आप कुछ कहने जा रहे थे No, मोदी जी के बारे में। we were talking about the humble backgrounds, the way he has, even development, even at this particular time, it is echoed what you already said. घर में there's a tragedy, but he's at time for any development work. There's nothing stopped. He doesn't stop himself. 365 days, 24/7, he's working for the nation. That's an That's right. inspiration for the entire. Now you say humble background, he never hides his humble background. He's proud to display his humble background. And that's an inspiration for the entire youth of today. You can look at our Prime Minister. If he can be the Prime Minister of this country, the So whole can nation, the whole nation, it's like an Indian dream come true. Anything is achievable. Anything is achievable. Yes. If Mr. Modi can do it, That's we right. all can do it, irrespective of whichever background we come from. I the tell you most what. poorest of poorest terror of the society. Pradeep ji, I tell you what. You know what Mr. Modi is doing today? Is exactly the kind of feeling that people used to have when Pandit Nehru was the Prime Minister. He, in fact, to my mind, is another Pandit Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru. You see, India has experienced 3 revolutions. One, when we became independent, जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, हम लोगों को आज़ादी मिली, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के सामने चैलेंज था कि किस प्रकार पूरे देश को कंसोलिडेट किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, किस तरीके से लोगों को एजुकेशन इम्पार्ट की जाए, किस तरीके से हम लोग एक मॉडर्न स्टेट बने, जिसकी वजह से ही इंस्पायर्ड पीपल विद हिज ओन एग्जांपल, पंडित जवाहरलाल नेहरू. उसके बाद द सेकंड रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1991 विद मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव. नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे व्हेन वी ओपनड अप आवर इकोनॉमी. एंड बाय द वे, जस्ट स्टिल स्पीकिंग अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड दिस इज एन एग्जांपल व्हिच मिस्टर मोदी हिमसेल्फ गिव्स, कि जब भारत देश आजाद हुआ, मोस्ट एक्सपर्ट्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड सेड के 5 या 10 साल का ये कुछ चलने वाला है, उसके बाद भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे एंड इंडिया विल नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर इटसेल्फ. पंडित नेहरू and his entire cabinet and the entire nation, Mother India, proved everybody wrong. उसके बाद 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह as our finance minister under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao. P.V. Narasimha Rao, a Prime Minister that unfortunately the Congress does not talk about, ushered in the second revolution, where India opened up its economy and was on the way to becoming the economic tiger it has become today. And then in 2014, this man on the screen, Narendra Modi. आज की तारीख में we are lucky to have a prime minister like Narendra Modi. जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी ने जो कॉन्फिडेंस दिया है भारतीयों में, इंडियंस में, हिंदुस्तानी कोई प्रदीप जी दुनिया के किसी भी कोने में हो और तकलीफ में हो, उसको सिर्फ जयशंकर साहब को और उसके पहले सुषमा स्वराज जी को सिर्फ ट्विटर पे लिखने की देर है कि मेरे साथ ये हो रहा है, and the Indian embassy or the Indian consulate or the Indian mission springs into action and immediately sees to it that that Indian is helped. He has defied, Yes. as you say, defied normal logic and political pundits wrong when the whole world was talking about coalitions. Even the BJP's tallest leader, Advani ji said there's not going to be any majority governments in the future because the whole world democratic institutions are witnessing coalition Yes. politics. And then this Mr. Modi Along came Modi. springs a surprise with a majority government. And Nobody ever believed that it could happen. No Pradeep ji, political and the vote. second time running, Yes, he and- gets more seats. And it defies 303. defies anti-incumbency. Yes. And he wins with more seats. And he's And- likely to defy anti-incumbency again Again. in 2024, where he will win 325 seats. Exactly. ये मैं बहुत पहले से बोल रहा And हूँ. wherever, and look at his dedication towards the work. जी. He takes the work head on. He's not. There are two ways of how you see people say. He is head on. It's like Mark Antony crashing from the front in every battle which he has fought. Head start, right from the front, attack from the front. And that's the way. unlike Mark Antony, Narendra Modi plans every move. He plans. He move. plans every one of his moves. But he's there right in the middle. When Yes. anything is happening, he's there right in the middle, leading the party, leading the flock, saying that if victory is there, you all are responsible. But if there's a defeat, I hold myself responsible. That's right. That's the kind of charisma, that's the kind of confidence he evokes. You look at what happened in among the Gujarat. people. Pradeep ji, look at what Exactly. happened in Gujarat. Yes. We were in fact the only channel that was saying from day one. In fact, we had also gone wrong. We went wrong by about 10 seats.
हम लोगों ने यहां पर कहा 135 सीट ±10, यहीं पर एक बार नहीं 20 बार कहा गया. They finally got 156. Exactly. We expected 145 on the maximum side. We got Leading from the 156. front. Leading from the And front. that's all thanks to Modi. Bilkul. There is no way about it. Number He's two. not afraid of laws. He says, if it is there, I am there, I'm responsible. That's the greatness of this guy. And if you say, you could write a book on leadership on this man, the way he's been conducting And himself. Pradeep ji, number two, उरी Exactly. नगरोटा और पठानकोट के ऊपर Yes. अटैक हुआ. उरी से हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया. उसके बाद बालाकोट, आज तक किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं पड़ी ये करने की. उसके बाद अभी आप देख लीजिए, we are buying Russian oil and gas, and what has happened? Nothing. As Mr. Jaishankar egged on and inspired and given confidence by Mr. Modi, as he says, hey, listen, I have to look after the interests of Indians. I don't have to look after the interests of Europeans. Yes. You've been looking after your interest. The amount of gas that you buy from Russia in 1 hour is what we buy in a month. So please stop pointing fingers at us. Set an example and then we will talk about it. As far as Mr. Modi is concerned, whether it is Joe Biden or it is now the UK Prime Minister, British Prime Minister, Mr. Rishi Sunak, or it is President Macron, or it is Prime Minister Trudeau, it is Modi. Modi is everywhere and respected by just about everybody. And by the way, जितना भी ऑपोजिशन बोल दे, जितनी भी विरोधी पार्टियां जो मर्जी विपक्ष जितना मर्जी चिल्ला ले चीख ले, चाइना को रोकने वाला सिर्फ एक देश है, वो है हिंदुस्तान, भारत, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में. और इसके पहले कि हम अपने अगले सब्जेक्ट पर जाएं, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. आज की तारीख में जो कोविड चल रहा है ना चाइना में, आप जानना चाहेंगे? आज की तारीख में the Chinese are buying Indian medicines. Pradeep ji. Bilkul, exactly, that's what you said. Indian medicines Yes. in the black market from all over the world. All the world. क्योंकि हिंदुस्तान से तो मांग नहीं सकते. Exactly. क्योंकि हम लोगों ने जब आपसे ऑक्सीजन मांगी थी तो आपने मना कर दिया था. Exactly. हिंदुस्तानी दवाइयां आप खरीद रहे हैं पूरी दुनिया से अपने कोविड के मरीजों को देने के लिए. हिंदुस्तानी वैक्सीन के लिए आप मर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम लोगों को मिल जाए. ये चाइना की बात है. तो पूरी दुनिया में अब ये बात फैल गई है कि एक देश है जो चाइना के सामने खड़ा हो सकता है एंड कैन पुश चाइना बैक. याद रख लीजिए वो कौन सा देश है? वो भारत है. और भारत को अपने ऊपर इतना भरोसा, इतना हौसला कहां से आया? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से आया. एज नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ सेज, Indians were always confident. Indians are like हनुमान जी. They just need to be reminded of their own strength. याद रख लीजिए, ये उदाहरण जो है हमेशा नरेंद्र मोदी जी देते हैं. In fact, I would say, I am saying it very unabashedly and unashamedly right here. We are lucky to have Mr. Modi as Prime Minister. I hope he continues. That's all that I can say. Pradeep ji, you want to say something? Yes, sir. I mean, he's depicted, if you see the entire Indian Ocean, India is a superpower. Today, if you see on the China border, whatever you say, we are there to stay. And with the way India infrastructure is being built up at the eastern borders, yes, northeastern borders, we are proud of this particular government, the way, because most of the governments never thought. All governments, Pradeep ji, 75 years it has not been done. No पहली बार हुआ है 70 सालों में. Yes, no government thought that there should be infrastructure built up near the Chinese border. Only this government thinks about it and proactively thinks about it. और तो और छोड़िए, बिल्कुल. अरे प्रदीप जी आपने बात छेड़ी है. Yes. ये कहते हैं जैसे एकनाथ शिंदे जी ने आज असेंबली में कहा, अगर बात निकलेगी जो बहुत दूर तक जाएगी, माफ कीजिएगा. एक एंटनी साहब एडमिटेड इन पब्लिक कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने जान करके हमारे चाइनीज बॉर्डर के ऊपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू प्रोवोक चाइना. Aggravate China. That is मतलब, what they even talk about. अरे even हद now. होती है. Yes, बिल्कुल. They said we didn't want to aggravate China. We never aggravated them. We divided both Pakistan and China and kept. In fact, we never wanted to invoke anything on the eastern, northeast borders. मतलब जो चाइनीज हैं हमारे अंदर आए, थप्पड़ मार के चले जाएं और हमारी जमीन पे कब्जा कर लें. हम उसके बात ही नहीं करें. और हम जो हैं कहेंगे भाई शांति शांति शांति. चलिए शांति होनी चाहिए, मैं मानता हूं. युद्ध कोई उपाय नहीं है. जैसा अकेले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिनमें इतना हौसला था, जिनमें इतना साहस था कि व्लादिमीर पुतिन को बोल दें कि साहब वॉर इज नॉट द आंसर इन द 21st सेंचुरी, यू हैव टू टॉक.
And that's- still be with him. and still be with him. Yes. And he said the same thing to President Zelensky of Ukraine. Both of you guys have to talk. Please, at the end of the day, even if the war lasts for 2 years, 3 years, 4 years, or 6 months, 7 months, whatever, finally you'll have to come on the table. So might as well sit on the table right now. That's what he said. And just for that alone, I think Mr. Modi deserves our respect. And if, by the way, the opposition had a brain, if the opposition had been thinking rationally, they would have at least appreciated the efforts of Mr. Narendra Modi. I appreciate them, and that's really and truly wonderful. Now, let's come to the other subject at hand, जो दूसरा सब्जेक्ट है. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साहब, बहुत दिलचस्प है. उसके पहले कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, जो सब्जेक्ट है हमारा, और उसके बाद हम बात करेंगे एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की. आज नागपुर सेशन खत्म हो गया, उनमें क्या मिला, क्या किया, सब लोगों ने अपनी अपनी अचीवमेंट्स गिनाई, उसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन उसके पहले बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की. लेकिन उसके पहले एक और चीज दिखा दूं, जो हमारा अभियान था नया नगर गोरेगांव को लेकर के, आज तक चल रहा है. याद रख लीजिए क्या चल रहा है प्रदीप जी, आज भी. Exactly. बीएमसी, अरे Yes. भाई बीएमसी की दाद देनी पड़ेगी. Mr. Akre, you've done a wonderful job. Can we have that on full frame, please? I really would like to see what's happening. Akre साहब, जबरदस्त काम किया है आपने. Akre साहब is the ward officer in charge over here. He's actually removing the garbage that is collected over there for the last 5 or 6 years. ये कचरा, जैसे प्रदीप जी आप बार बार बोलते हैं, ये कोई Yes. 1.5 या 2 महीने का है. 1.5 या 2 महीने लगेंगे इसको उठाने में. वो भी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगा दोगे तो लेकिन 500-600 ट्रक का कचरा है, जी, गार्बेज. लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आकरे साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया. आदरणीय सम्माननीय हमारे इकबाल सिंह चहल साहब, दी बीएमसी कमिश्नर, उनके हस्तक्षेप के ऊपर ही इज डन अ वंडरफुल जॉब, एंड आई होप ही कंटिन्यूज. We were saying even yesterday, I hope this continues. It is continuing. These are today's pictures, by the way. Exactly. These are today's The pictures. work. We got the infrastructure. One thing we admit, as you said, the country is praising the way the BMC is functioning. We have to admire that these administration, the bureaucrats, if they want to do something, Yes. and if they are given a free hand, they are going to do it, whatever it takes them. Now, if you say 500 ट्रक गार्बेज डेब्री का कचरा जिस प्रकार से लगातार उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को वहां पर लगा के वो जिस प्रकार से सफाई का अभियान किया, यू हैड हेल्थ कैंप इमीडिएटली. आपने जब डिपिक्ट किया कि लोग यहाँ पर मर रहे हैं, मलेरिया, डेंगू और वेरियस सीरियस डिजीजेस से, छोटे छोटे बच्चे का तकलीफ हो रहा है, दे आर फीलिंग सिक एंड मेनी ऑफ देम हैव डाइड. They organized a health camp. That's right. Again, the bureaucrats, the administration have risen to the occasion. But our local politicians, because of local issues and local political thinking, destroy the way things should be. If Well, a medical camp had to be in a place where the people are suffering, suddenly you find it being dragged because of local politics. But this is what you're trying to understand is the response, the immediate quick response by the administration. And continuous response. And continuous response. And It does not consistent stop. It does not stop. And let me tell you, sir, 500 trucks of garbage और जिस प्रकार से वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, it's not a small task, it's a huge task. It's a huge task and it continues. Movement of materials, movement of manpower, movement of resources towards right. this place to see that this entire thing that is badly done, the garbage, the gutter जिस प्रकार से खुला हुआ है, dirtiness. और प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यह है, which could, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो माफिया है वहां पे, Exactly. they did not want this to be done. They don't want it to be done. They want the people live in that particular dirt. They want people to live in that bad hell. conditions so that they earn money out of this. They earn money out of this, or they leave that place, because do remember that is private land. वो अपने आप वो जगह छोड़ करके भाग जाए वहां से. याद रखें, ये स्लम जो है धारावी के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट स्लम है मुंबई का. इसलिए I really must thank Mr. Iqbal Singh Chahal, Mr. Chandrasekhar Chore, and of course Ms. Bhagyashree Kapase, the DMC of Zone 7, and Mr. Rajesh Akre. Rajesh Akre ji, really and truly wonderful job. Absolutely wonderful job. Please keep it up. Rajesh Akre ji वार्ड ऑफिसर है वहाँ के. उन्होंने किसी की नहीं सुनी. बहुत लोग उनके पास आए, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो एक्सेस रोड ही नहीं है, नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते. उन्होंने किसी की नहीं सुनी. उन्होंने अपना पूरा काम किया, अपनी ड्यूटी भरपूर निभा रहे हैं, सिंसेरिटी से निभा रहे हैं, दिल से निभा रहे हैं. सल्यूट टू यू सर, प्लीज कीप इट अप. एंड आई थिंक देयर विल बी अनदर हेल्थ कैंप हेल्ड इन नेक्स्ट वीक, बहुत जल्दी वहाँ पे, मतलब ड्यूरिंग द न्यू ईयर, राइट ऑन द स्पॉट इन नया नगर 1.
अभी गणेश मंदिर के पास एक हेल्थ कैंप वहां पे लगाया गया था, अब नया नगर पे भी लगाया जाएगा. That is the assurance that we have been given. Now this is absolutely wonderful, really and truly wonderful. Let's be very clear. जहां तक हम लोगों का सवाल है, नेशन नाउ का जहां तक सवाल है, एडवोकेट प्रदीप नामजात जी और मेरा जहां तक सवाल है, हम लोगों ने अगर किसी को क्रिटिसाइज किया है जब काम ठीक नहीं हुआ है, जब काम अच्छा हुआ है, we are also the first to praise these people. And the BMC, that is our Brihan Mumbai Municipal Corporation, really deserves praise right now. Thank you again and keep it up. Keep it up. Sir, it's fantastic. I mean, you can understand the way things are now. Municipal BMC has got a huge task before it. Entire Mumbai, one of the biggest cities and financial capital of India. And their manpower is already optimum, obsessed with this kind of already existing problems across Mumbai. And when certain things have been highlighted, to work out things, to arrange manpower, this is actually a good planning where disaster management is also considered. The greatest right. example where suddenly some things erupt which was not noticed before, and how the BMC acts, pulls resources, mobilizes its people, and get things done. Absolutely. In all departments Wonderful. where health is concerned, sanitation is concerned, solid waste management is concerned, engineering, road is concerned, they have been And doing a marvelous conservancy. job. Very well done. We need to appreciate that. Very well done indeed. Right? That is about Goregaon. That is about our ongoing campaign with regard to Naya Nagar. और ये हमारी campaign जारी रहेगी. ये भी मैं आपको बता दूं. It is not as if we are going to stop right here. We shall continue and we shall keep going back over there, because the elephant in the room, as I've mentioned so many times, is the lack of electricity for these 4,700 dwellings. 4,700 dwelling तो वहीं पर हैं, वहाँ पर बिजली नहीं है, और जब तक वहाँ बिजली नहीं पहुँचती, हर एक के घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर नहीं लगता, तब तक हमारा अभियान ये जारी रहेगा. फिलहाल let's go across and see what Mr. Rahul Gandhi has been able to achieve up till now. Rahul Gandhi साहब ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी. And Pradeep ji, we must appreciate the fact that he's getting a good response. He's getting a very good response. There's no doubt about it. And I must say, as we have been speculating here, and we have been analyzing here, and we have been discussing here on this show, the Congress has this huge support base. कांग्रेस के समर्थक जो हैं, कांग्रेस का जो ऑर्डिनरी वर्कर है, साधारण कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का, वो जबरदस्त है साहब. यू कैन नॉट राइट ऑफ दैट कांग्रेस वर्कर. प्रदीप जी, Exactly. उसको सिर्फ नेतृत्व की आवश्यकता है. आज देखिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ आई है, जिस प्रकार राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है. अब ये समर्थन जो है ये वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है. लेकिन Congress as a party has re-established its own identity and its presence as a political party, and that is because the workers were just waiting for a little bit of leadership, and Rahul Gandhi has provided that. Pradeep ji. Sir, you got in Congress, you got a grand old organization in place. You got party level workers right to the ward level, to the lowest level, booth level पे आपको पूरे देश में आपको मिले. They got more than 20% vote share across the nation. All you have to do is, you got a big party, you got campaign oriented. Now I must stop you just a second. Yes. That small visual that you saw was by the way of Mr. Narendra Modi, and he has nothing to do with the Congress party. All right? That where he is inaugurating that train. It is Mr. Modi who is inaugurating the train. And that is not part of the Bharat Jodo Yatra. Gee. And Bharat, you got a big party, you got a huge party, you got a grand old party. You got the people at ward level, at booth level, across the nation. You got more than 20% vote share across the nation. You got participation across all states, majority of the states of India. What he needed was a leadership to infuse, put fire, to ignite. Yes. And after a long time, after the Congress has lost power since 2014, I think this is the first time that the Rahul Gandhi leadership skills are showcased to the whole country, and the way he has taken it, absolutely detached. He is not involved in the daily rumblings. He's slowly mixing up with the people, charging the people, mobilizing his cadre, taking the cadre along with. He's talking about women empowerment, and women constitute 50% of the population. Yes. And you're talking about women empowerment. You are setting your formula across that women are essential part of the organization and policy making, decision making of this country.
and they need that equal participation. एजेंडा जिस प्रकार से धीरे धीरे वो कर रहे हैं कि प्राइस राइज है, आप लोग क्या कर रहे हो? प्राइस राइज पेट्रोल के डीजल प्राइस राइज, दाल उसके प्राइस राइज, वेजिटेबल्स के प्राइस राइज, धीरे 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 इस चीज को हाईलाइट करते हुए वो डिटैच तरीके से. Now we all thought that why he was not in Gujarat when the thing was there. Yes. Now he's got his own plans, he's working to his own plans and he's moving, and the way जो participation पूरे Congress workers के enthusiasm जो लोगों के हैं, that needs to be admired. Look at the way they are doing. Absolutely. Inspiring leadership. The inspiring leadership, the Congress is entirely going into the gear mode for 2024. We were all complaining what the Congress is doing. But look at here, the Congress has actually taken the BJP. Now BJP is getting slowly worried. Slowly, जिस प्रकार से participation is जोड़ो यात्रा में चल रहा है. So they are attacking his t-shirt. लोग जुड़ रहे, yes, लोग जुड़ रहे हैं. तो टी-शर्ट के बहाने पैंट इस कलर के पहने, किसको साथ में लेके चल रहे हैं, इसको कभी मेधा पाटकर को लेके चल, तो अलग अलग प्रकार से the BJP is not leaving one stone unturned every day to cast aspirations on the conduct of the Bharat. I must add something here. बिल्कुल. The BJP is not leaving a single stone unturned Yes. to transform Rahul Gandhi from Pappu into a real नेता. Yes. मुझे ऐसा लग रहा है Sir. कि भारतीय जनता पार्टी का योगदान इसमें सबसे ज्यादा है, एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन का, जो बार बार कभी उनकी टी शर्ट के ऊपर व्यंग कस रहे हैं, कभी किसी और चीज के ऊपर व्यंग कस रहे हैं. अरे भाई राहुल गांधी है, ही इज वेरी फिट, आपकी तरह नहीं है. आप भी तरह एक्सरसाइज क्या करें, जिम में जाया करें, जैसे आपके किरण रिजिजू जाते हैं, बाकी सब लोग जाते हैं. लुक एट हिज फिटनेस लेवल, ही इज अमेजिंग बाय द वे, दैट एंड इट्स फैंटास्टिक. और दूसरी चीज यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है, राहुल गांधी जी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे वाले दिन, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन वाले दिन, अटल बिहारी वाजपेयी के मेमोरियल पर गए, अटल स्थल पर वहां गए राजघाट पे, टू पे हिज होमाज टू मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. As Rahul Gandhi said, Atal Bihari Vajpayee ji used to stand for reconciliation. He stood for humanity, इंसानियत के लिए. He stood for all communities in this great country to live in harmony with each other. That's what Rahul Gandhi said. And I think that drove quite a lot of people wild. They said, why has he gone over there? Why has he not gone to visit P.V. Narasimha Rao's memorial? And so on and so forth. But that's just nitpicking. The fact remains, perhaps, I'm not sure, maybe Pradeep ji can throw some light on it, perhaps the Congress has been revived. I am not really sure though. I think it will be revived after they've set up an entire organization, a proper structure everywhere, and all these old satraps who have lived off the fat of the land because of the Congress are slowly retired, and a new generation of Congress leaders takes over. Pradeep ji. Sir, actually that's what's happening. Just Prakash ne kaha ki we want to give the youth more power within the party, and probably they're moving towards that. जितने पुराने लोग हैं, जैसे कपिल सिब्बल है, अपने आप सब निकल के बाहर गए, instead of being humiliated, asked to leave. Yes. So things are moving for the Congress, but there are critical issues on which the Congress needs to show what their policies are. Now, when we talk about internal security, we talk about national security, this is where the Congress will have to show that they mean business. They have to pick out some leaf of what Indira Gandhi has done where the 1972 war was concerned. 71 war. Sorry, 1971 war was concerned. How Indira Gandhi has risen to the occasion wherever the country was. There was a threat to the country, there was national security concerns. Because here is where the problem happened after the 26/11 attacks. Then the Congress government under Manmohan Singh probably could not deliver, never showed the intent. And since then on, the people, the country, the people, the whole nation wanted a change. You need to infuse some kind of spirit, some kind of policy making where these concerned. First is national security. Second is appeasement, which the BJP accuses the Congress of. Yes. Accuses the Congress of. So Congress has to come out with a new technique, a new policy, a new way of telling to the people, reaching out to the people. Secularism is one, but Advani ji time again pointed out when he was alive of pseudo-secularism that they believed in.
Secularism was appeasement of minorities, and this has stuck with the Congress. Whatever Rahul Gandhi is doing, the march is fantastic, reviving the grand old party is fantastic, booth level, ward level, revival, energy, everything is there. We found that he had a few campaigns in Gujarat, and Congress did, whatever you call, within the 2 or 3 campaigns, Congress did absolutely well. The entire machinery of the Congress was geared up. We always believe that if he was staying for more time in Gujarat, at least having an entire campaign rooted out for him in Gujarat, probably Congress could have done better. But that's not the point. Now we're coming about what the Congress needs to do to see that they are fighting fit for 2024. प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है जो आपने कही, कांग्रेस के पास देश की सुरक्षा को लेकर के कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक के अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, इट इज ऑल राइट टू क्रिटिसाइज मिस्टर मोदी, आप क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन आपके पास विकल्प क्या है? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव दैट यू आर प्रपोजिंग? आपका प्रपोजल क्या है? नंबर 2। नंबर 3, जब भी व्हेनेवर द कांग्रेस हैज गॉन फॉर सॉफ्ट हिंदुत्व, मंदिर जाना, आरती करना, ये सब करना, एक चीज याद रख लीजिए, यू कैनॉट आउटडू द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ बीइंग द बीजेपी। यू कैनॉट बी अ पार्ट 2, बीजेपी पार्ट 2, बीजेपी पार्ट 1 पहले से ही है। सीधी सादी बात है, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, द कांग्रेस एज आई बीन सेइंग ऑल अलोंग, जो राहुल गांधी ने किया वही चीज वो अभी कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के दौरान किया। याद रखें, कांग्रेस ऑलरेडी हैज अ रेडीमेड प्लेबुक। उनको एक एक चीज उनके सामने है, उनके पास जीपीएस है, यानी गाइड बुक है। वो गाइड बुक क्या है? महात्मा गांधी जी की जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उनको आप स्टडी कीजिए। गांधी जी तो आखिरकार आप ही के थे, कांग्रेस के ही थे ना। वो दूसरी बात है कि आज की तारीख में गांधी जी को भी एक्वायर कर लिया आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। आप सिर्फ गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चलें, कांग्रेस विल बी रिवाइव्ड। छोटे से छोटे वर्कर से लेकर के बड़े से बड़े नेता को उसी तरीके से आप ट्रीट करें, सबको अपने साथ लेके चलें, पूरे देश को साथ लेके चलें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। साउंड्स क्लीशेड, but that is the only path the Congress can adopt. Let's be very clear. So you have to make the people confident in your ability to govern the country. आज की तारीख में that governance factor, you fail miserably at that, because in front of you is Narendra Modi. He has shown a robust, completely and totally no nonsense approach when it comes to national interests. जहां तक के राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र के सामने कुछ नहीं है, भारत माता के सामने कुछ नहीं है। जब तक आप ये कॉन्फिडेंस, जब तक ये आप भारत के हर नागरिक में उसकी ये हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तब तक आप वापस नहीं आ सकते। नंबर 2, जहां तक ऑर्गेनाइजेशन का प्रश्न है, संगठन का प्रश्न है, संगठनात्मक तरीके से जो भी फेरबदल आपको करनी है, आपको करनी ही होगी। और जितने भी आपके बड़े बड़े सत्रप जो बैठे हुए हैं, एज आई सेड, लिविंग ऑफ द फैट ऑफ द लैंड ऑन द कांग्रेस बैनर, उन सबको बोलिए, कम आउट ऑन द स्ट्रीट और एल्स गो होम। बाय द वे, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट नितिन गडकरी डिड। जब नितिन गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उनके जितने भी नेता उस वक्त के, जो हमेशा सिर्फ आजकल ट्विटर की जैसे राजनीति होती है ना, उस वक्त बाइट वर्सेस बाइट की राजनीति हुआ करती थी, या स्टूडियो वर्सेस स्टूडियो की राजनीति हुआ करती थी। नितिन गडकरी साहब ने यह किया, हर एक नेता को यह कहा, सड़क पे आइए, सड़क की लड़ाई लड़िए, लोगों को अपने साथ करिए। यही कांग्रेस को करना पड़ेगा। आज ये जो ट्विटर आप खिलते हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस विल हैव टू गो राइट बैक टू इट्स रूट्स, एंड द रूट्स आर देयर फॉर ऑल टू सी। रीड अप। गांधी जी ने एक नहीं न जाने कितनी किताबें लिखी हैं, पढ़ लीजिए, मालूम पड़ जाएगा आपको क्या करना है। आज की तारीख में द मोस्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी इज ए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एंड बी, माई थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप। ये दोनों चीजें अगर आप गांधी जी द्वारा लिखित अगर आप पढ़ लें, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना है। प्रदीप जी। सर, इफ यू सी द करंट जनरेशन को आप पूछोगे कि दे विल बिलीव दैट महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो पार्ट ऑफ द बीजेपी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आज के जनरेशन में जो आप
today's generation don't, even because they will know what has been fed to them right now. And Mahatma Gandhi looks like Ben Kingsley. Yes. And if you, what is being fed to them now? Narendra Modi, Swachhata Abhiyan, Mahatma Gandhi is. Mahatma Gandhi ka chashma. Yes, and leadership, spiritual leadership, Mahatma Gandhi ke puche. And Statue of Unity. Statue of Unity. Sardar Vallabhbhai Patel. Leadership, when you talk about leadership, Narendra Modi, the Prime Minister, always talks about spiritual leadership inspired by Mahatma Gandhi. Sardar Vallabhbhai, he says Sardar Vallabhbhai, the Home Minister जिस प्रकार से होना चाहिए था, और जैसे आपने बोला Statue of Unity, तो इस प्रकार से आज पूरे गांधी, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल को बीजेपी ने हाईजैक किया है, तो आने वाले जनरेशन को यही पता चलेगा कि they were part of the BJP. Now we are talking about what are they? You talked very rightly when you said the BJP, where nationalism is concerned, where national security is concerned, where appeasement politics is concerned, where economy is concerned. You don't have an alternative to Mr. Modi, because everything that he says rightly sticks to the core of the people. Economy, whatever you say, they have been highlighted. The economy under Manmohan Singh from 2009, when it was 9.7 se leke GDP growth, 2013 it came to around 4.6. That's right. There was a tremendous downfall. They're unconvincing. And they also highlight the very fact that Mr. Raghuram Rajan, whom they say is the great economist, the revival, and walking with Rahul Gandhi, probably saying that he's going to be the next whatever, a part of the think tank of the Congress, where revival of economy is concerned, or taking them to places. They very highlight that right from 2009 to 2013, Mr. Raghuram Rajan was part of the entire downfall of the Indian economy. That's he couldn't do anything. So what are you have and to he's go. The guy who signed off on all the bad loans. And we need to understand that That's you right. got a grand old party there. You got an inspiring leadership right now. Rahul Gandhi moving length and breadth of India the way he wants to go. It should be. You need to have campaigns touching the hearts of the people, right from the poorest of poor, downtrodden, to the richest man, to the industrialist. You have to have a plan, and then you have to work 365 days to attain that particular thing. Now, which of you can't go on holiday, sir. You can't go on a holiday. You can't be. It's a full-time occupation. You can't be a part-time political party. You can't. As Mr. Modi has depicted, even there's tragedy in the home today. And he's back at work. He's back straight to work. He carries his mom. Jai Hind, Sahab. Jai Hind. Yes. He performs his final rites, and then he's on to the job. He's on the job immediately. Right. No rest. There's nothing. There's no leisure. There are no free lunches. Nothing can happen. That's right. He's showing to the entire country. So Congress needs to highlight what is their take on national security, on nationalism, appeasement politics, and the economy. And terror from within. Yes. So, और भारत के अंदर जिस प्रकार जो आंतरिक दुश्मन है भारत के उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? Soft on terror modules, soft on sleeper cells. ये सीधी सादी बात है. You can't be that. You can't be that. You need to show your iron hand, the iron fist. When Rajiv Gandhi was yes, he used to talk about the iron fist and all those. You need to talk about it. You can't keep mum and believe that these things will just disappear. They won't. If they are terrorism, you need to deal it. You need to crush it. That's it. You need to create an example. Absolutely. You need to create fear in the minds of the people. See, people are seeing when there were continuous attacks in Mumbai, across till 2009 or whatever, and till 2011, and 2012. Delhi. Yes. And Delhi. Continuous. And Haridwar. And Banaras. Why hasn't it stopped now? Why has it stopped now? This is what it is moving in the minds of the people. The Congress needs to come out and address these issues which has doubts in the people, in the minds of the people. What are your policies? What are your policies for these? प्रदीप जी, जब तक इस पर कांग्रेस विचार विमर्श नहीं करेगी, तब तक ये यात्रा, it's inspiring. That's it. But you have to have issues that connects to every segment of the society. They are all your voters. Why should they vote for you? Why will they vote for you? Because you have to inspire confidence in for them. What's in it for? Even now, whichever the government जो aids आता है, जो governments के जो relief आता है, it is going direct to the bank accounts of the people. That's right. Even biggest today, achievement. Yes, the greatest achievement. Mr. Modi's biggest achievement. बिल्कुल. Even today, when the Eknath Shinde, whatever, they were saying that there's no middleman involved. The relief to the farmers, which we are giving per hectare, is going straight to the farmer, straight to his account. Absolutely. So the people believe that this is invention of Mr. Modi. Whatever he has done, this is all
done, implemented true. by Pradeep, Mr. Pradeep, Modi. Pradeep ji, So सच्चाई है. where is the place left for the Congress to come out with issues? You need to come out with issues. प्रदीप जी, Yatras सबसे are बड़ी बात fantastic. यहां ये बनती है कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस को एक विकल्प कि कांग्रेस की क्या नीति है. आफ्टर ऑल, व्हाई शुड बी एनीबडी वोट फॉर द कांग्रेस नाउ इफ यू आर गोइंग टू बी बीजेपी पार्ट 2? व्हाई शुड एनीबडी वोट फॉर यू? सीधी सादी बात है. आपको बीजेपी और आप में क्या फर्क है वो दिखाना पड़ेगा, और क्या वो फर्क जो है वो देश के लिए अच्छा है कि नहीं है. सबसे बड़ी बात ये है. That's it for the Congress. I hope they do something. I hope they come out with an alternative plan. I hope they come out with something which enthuses the entire nation. I hope they are able to get their voters back. सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है. लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आप गांधी जी को फॉलो करें. गांधी जी कांग्रेसी हुआ करते थे. गांधी जी को फॉलो करें, गांधी जी के मार्गदर्शन पर आप चलें. हो सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर जागरूक हो जाए. राइट, नाउ लेट्स कम बैक टू महाराष्ट्र. आते हैं महाराष्ट्र पर. प्रदीप जी, बिल्कुल सर. टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ द नागपुर असेंबली. Yes. और ये साल का भी आखिरी दिन है तकरीबन. Exactly. वर्किंग डे आखिरी है. अब ये लाजमी हो जाता है हर सरकार के लिए अपनी अचीवमेंट्स को गिनाना वगैरह वगैरह वगैरह. आज वही हुआ. देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने पत्रकार परिषद ली नागपुर में. नागपुर में जो परिषद ली वो हम दिखाते हैं आपको एक सेकंड में. बोथ द जेंटलमैन, मिस्टर एकनाथ शिंदे एंड मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, some people say they could detect some tension. I could not. They seem to be cooperating with each other now and very well, and you know, getting energy from each other, which is absolutely fantastic for the state. Both of them together, they talked about all their achievements ever since they've come into power. Let's take a look at Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Eknath Shinde. मी आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन या ठिकाणी नुकतंच संपन्न झालंय. दोन्ही सभागृहामध्ये भरपूर कामकाज या 2 आठवड्याच्या अधिवेशनामध्ये पार पडलं. हे खरं आहे की सुरुवातीच्या काळामध्ये काही बहिष्कार झाला, काही सभागृह बंद पाडण्यात आलं, पण नंतरच्या काळामध्ये सकाळी 9 ते रात्री 11, सकाळी 9 ते रात्री 11:30 असं सातत्याने सभागृह चालवून या वेळेची भरपाई करून आणि मोठ्या प्रमाणात या अधिवेशनामध्ये कामकाज करण्यात आलं. मी विरोधी पक्षाचे देखील आभार मानेन की सुरुवातीला जरी त्यांनी अधिवेशनामध्ये बंद पाडण्याची भूमिका घेतली तरी नंतरच्या काळामध्ये मात्र त्यांनी अधिवेशनामध्ये पूर्ण सहभाग घेतला आणि त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या चर्चा या ठिकाणी होऊ शकल्या. मी सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानेन की विदर्भामध्ये होणारं अधिवेशन विदर्भाला काहीतरी देऊन जाणारा असलं पाहिजे अशा प्रकारची नेहमी अपेक्षा असते. 3 वर्ष अधिवेशन इथे झालं नाही, त्यामुळे हे होईल की नाही अशी देखील शंका होती. परंतु अधिवेशन झालंही आणि अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय विदर्भाकरता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी घोषित केले आणि मी त्यांचे एक विदर्भवासी म्हणून मनापासून आभार मानतो की आमच्या धान उत्पादक शेतकऱ्याला हेक्टरी 15,000 रुपये 2 हेक्टरापर्यंत देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. या नवीन बोनसच्या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना थेट खात्यामध्ये बोनस मिळेल आणि शेतकऱ्याच्या नावाने छत्तीसगडमधून धान आणून जे लोक बोनस कमवण्याचा प्रयत्न करत होते त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात चाप या ठिकाणी बसेल आणि शेतकऱ्याचा बोनस शेतकऱ्याला, व्यापाऱ्याला नाही, अशा प्रकारची ही नवीन पद्धत
या ठिकाणी स्वीकारली, म्हणून मी त्यांचं अभिनंदन करतो, आभार मानतो। आणि या पद्धतीमुळे आधीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना आता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मदत मिळणार आहे। यासोबत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी राइट प्रदीप जी, बिल्कुल सर। Mr. Devendra Fadnavis thanking Mr. Eknath Shinde Exactly, for sir. what he has done for the Vidarbha Bilkul, sir. farmers. Yes. 15,000 रुपए fee a hectare. Yes, sir. And plus all the entire bonus and everything else to be deposited, as you said, directly into the accounts of farmers. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी, देवेंद्र फडणवीस जी आभार मान रहे हैं किसका? एकनाथ शिंदे जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि वो क्योंकि वो खुद विदर्भ के रहने वाले हैं, वो खुद विदर्भ के रहने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस जी, और आभार मान रहे हैं एकनाथ शिंदे जी का कि विदर्भ के लोगों के लिए उन्होंने ना जाने क्या कुछ किया, इतना सब कुछ किया। उसके लिए it was really nice to see Mr. Devendra Fadnavis acknowledging what the Chief Minister, Mr. Eknath Shinde has done. Pradeep ji. Sir, the entire जो उनके जो coordination है, chemistry है, is fantastic now. Fadnavis, resigning to the very facts that he has to play the deputy, and the greater good of the state, greater good of the nation, the greater good of BJP, that he has to take him as a leader, and he's talking to the T. Absolutely. Now, the various facts that all the development agenda is right now out in the open. Yes. Earlier we had 2.5 years, but actually because of various reasons, including COVID, the development agenda had taken backline. Was in the back burner. Was in the, yes. And we had a leadership problem with medical, the CM having medical problems. Things were not functioning. Now you see every project is out and project is moving fast. Project is moving as per directions, as per timetable, as per faster schedule. Than the timetable. Faster, absolutely. And you got a very proactive chief minister. Yes. Who's so, pushing every development, every single thought of development, he's pushing towards this. It's Yes. 24/7 without rest, 365 days. Same thing in the center and the same thing in Maharashtra. This is going to create opportunities, So employment opportunities. bullet train, industry, metro, 15 lines of agriculture, metro. everything. They are. In fact, they're grooming industrialists, pulling them in and saying, come on, start. And Everything plus, is open. और एक और चीज के Tell us बारे में what you प्रदीप want. जी, जिसके बारे में अभी बात नहीं करी बिल्कुल है, सर। जिसके बारे में हम लोग कल या नहीं तो सोमवार को बात करेंगे। Irrigation, कि sir. इरिगेशन सिस्टम तो है ही, नहीं एग्रीकल्चर तो है ही, उसके अलावा जो छोटे छोटे एयरपोर्ट की जो स्कीम है उसको दोबारा रिवाइव की गई है। हर एक MIDC का जो एयरपोर्ट है, याद रखें, Maharashtra is perhaps one of the very few states where every MIDC has its own attached airport, और उस एयरपोर्ट को दोबारा रिवाइव करना और छोटे छोटे एयरक्राफ्ट फिर दोबारा रिवाइव करना, ताकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और भी जबरदस्त तरीके से हो सके। Now let's hear what the Chief Minister, Mr. Eknath Shinde had to say. एकनाथ शिंदे साहब ने क्या कहा, वो भी जरा देख लेते हैं। पत्रकारांचं मनापासून स्वागत। हे आमच्या सरकारचं नागपूरमध्ये पहिलंच अधिवेशन। गेले 2 वर्ष काय अधिवेशन होऊ शकलं नाही, आणि सरकार बदललं नसतं तर याही वर्षी नसतं झालं। कुठे तिकडे चायना जपानमध्ये कुठे कोविड आलं ना, पण असो खरं म्हणजे विदर्भामध्ये अधिवेशन होत असताना विदर्भवासियांची अपेक्षा असते की या भागामध्ये प्रश्नांना न्याय मिळाला पाहिजे, जे काही प्रलंबित विषय आहेत ते मार्गी लागले पाहिजे, आणि जो अनुशेष आहे तो भरून काढला पाहिजे। त्या दृष्टीने खऱ्या अर्थाने हे अधिवेशन कामकाज 10 दिवस चाललं, आणि जसं उपमुख्यमंत्री महोदय म्हणाले की पहिला दिवस सोडल्यानंतर सकाळी म्हणजे अध्यक्ष देखील आमचे 9 वाजता सभागृह सुरू करायचे, आणि काल तर मला वाटतं 12:30 पर्यंत सभागृह चाललं, 12-12:30 पर्यंत। असं अतिशय खूप जास्तीचं कामकाज या अधिवेशनात झालं, आणि नुसतं कामकाज नाही, त्याचं फलित देखील आपण पाहतोय की या विदर्भामध्ये जे विषय गेले अनेक वर्ष प्रलंबित होते, सिंचनाचे असतील, विकासाचे असतील, धानाचा देखील बोनस उपमुख्यमंत्री महोदयांनी उल्लेख केला आहे
की पहिल्यांदाच 15,000 रुपये हेक्टरी देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कुठलेही गैरप्रकार होणार नाहीत. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतील. मधले कोणी जे आहेत व्यापारी एजंट त्यांना बिलकुल कुठेही संधी नाही. आणि त्यामुळे खरं म्हणजे ही शेतकऱ्यांची भावना होती, लोकांची भावना होती की बोनस मिळाला पाहिजे. परंतु मी सभागृहात देखील सांगितलं की विरोधी पक्षांनी काही लावून धरला नव्हता हा विषय, परंतु आम्हाला माहीत होतं की धानाला बोनस दिला पाहिजे. गेल्या वर्षी ते दिला नव्हता. परंतु यावर्षी आपलं जे सरकार आहे, सर्वसामान्यांचं शेतकऱ्यांचं सरकार, या सरकारच्या माध्यमातून लोकांना जे पाहिजे ते देण्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. बाकी विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र तिन्ही वैधानिक विकास महामंडळ जे आहेत त्याचे पुनर्गठन होईल. समतोल प्रादेशिक विकासासाठी देखील प्रयत्न होईल. तसं आता उपमुख्यमंत्री महोदय म्हणाले, नागपूरपासून गोव्यापर्यंत जो शक्तिपीठ आहे, नवा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, नागपूर, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, असं गोव्यापर्यंत मोठा एक कॉरिडॉर होईल. विदर्भ मराठवाडा टुरिझम सर्किट आपण करतोय. पर्यटन देखील मोठ्या प्रमाणावर आपण त्याला चालना देतोय. गोसीखुर्दमध्ये 100 एकर जागेवर जागतिक दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प देखील उभा राहतोय. बाकी जे सिंचनाचे प्रकल्प आहेत हे मोठ्या प्रमाणावर आपण त्याला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे आणि त्यामुळे जवळपास 2.5 लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. आणि जे खऱ्या अर्थाने प्रकल्प आपण राबवतोय, पूर्वीसारखं मी सांगत नाही पूर्वी काय झालं ते, म्हणजे खर्च झाला पण त्याचा जमीन सिंचनाखाली आली नाही, पण त्यात मी जात नाही. परंतु या आमच्या सरकारमध्ये आल्यानंतर 18 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आणि त्यामुळे विदर्भामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर जमीन सिंचनाखाली येईल. मोठ्या प्रमाणावर Right, the Chief Minister very bullish on what he is doing in Maharashtra. Chief Minister एकनाथ शिंदे एक बार फिर अपने अभी आक्रामक मोड में नहीं दिख रहे, बाद में दिखे थे, लेकिन जो चीज़ उन्होंने कही है कि 18 प्रकल्प उन्होंने किस प्रकार लिए हैं, किस प्रकार एक नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है, नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक टूरिस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है. I mean, this is absolutely amazing. गरीबों को, शेतकरियों को जिस प्रकार से मदद पहुंचा रहा है, फेल्ड मानसून जो भी होगा प्रॉब्लम होगा उसको कैसे रिवाइव कर रहा है, तो एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपने नोटिस किया होगा सर, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फडणवीस, एकनाथ शिंदे एंड अजित पवार. Amazing. Out of the world. Out of the world. Yes. जो कोऑर्डिनेशन तालमेल लिया, जयंत पाटिल को सस्पेंड किया, nothing happened in the house, everything was going normal. In fact, on the last day, today, Ajit Pawar stands up and tells Eknath Shinde, he said, why are you bothered about what is written? He said in some paper that is actually talks about Samna. Yes. He said, if Samna writes anything, this house is not bothered about that. Yes. Why should you be bothered about it? You have been elected. Look at the message he's giving, sir. And look at the coordination between the three, Shinde, Fadnavas and Ajit Pawar. No wonder both of them thank the opposition. उन्होंने कहा कि आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है जी, बिकॉज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पेपर क्या लिखा है. एंड स्पेशली रिमाइंडिंग सामना that you whatever you write we are not concerned. And he's a partner. He's a partner. So इतने फ्लैम्बॉयंट तरीके से, इतने बोल्ड तरीके से अजित पवार ने जिस प्रकार से बोला कि आपको जो भी 50 खोखे बोलते हैं उसको उत्तर देने की जरूरत ही क्या है जी. आपको जरूरत नहीं है. आपको मैंडेट मिला है, मैंडेट मिला है तो काम कीजिए. आप, हमें काम से मतलब है आप क्या करते हो. डेवलपमेंट के एजेंडा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले, गरीब से गरीब लोगों को आप पे भरोसा है कि आप कुछ करके देंगे, कुछ क्रिएट करेंगे. उस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं. और साथ में एक महिला को, और साथ में कुछ महिलाओं को कैबिनेट में ले लो. चल रहा था. बट द अंडरस्टैंडिंग एंड टू रिसीव अनिल देशमुख स्पेशल गवर्नमेंट फ्लाइट, स्टेट फ्लाइट from Nagpur to Ajit Pawar to in a government plane. Yeah, the government plane to come here and take him back. That shows the coordination. And this is Finally Maharashtra is back. Sharad Pawar slightly,
जिस प्रकार से चल रहा है, अजित पवार को लेकिन पत्रकार प्रदीप मंत्री जी, पूछे कि शरद प्रदीप पवार जी, नाराज है, तो आप क्या कर प्रदीप रहे जी, हो? यही महाराष्ट्र है जिसको हम जानते हैं। एग्जैक्टली, ये पारंपरिक महाराष्ट्र है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पारंपरिक महाराष्ट्र की पारंपरिक राजनीति है, Yes. जहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं। यही है अभी तक जो चल रहा था। वेरी अनफॉर्चुनेटली we have our friend Mr. Sanjay Raut and a couple of other people who have brought the level of debate to a lower than lower strata. I hope that never comes back. व्यंग्य कसिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कीजिए, सरकास्टिक रिमार्क्स पास कीजिए, लेकिन अभी तक जो रिवेंज वाली बदले की भावना से जो राजनीति दिख रही थी, वो उसका आज समापन होते हुए दिखा है, वेरी फ्रैंकली, एंड थैंक गॉड फॉर दैट. And I am really and truly happy for Maharashtra. At least in the new year, I hope we shall witness both the opposition and the ruling party, both of them, work together for the betterment and improvement of Maharashtra. As far as Mr. Shinde is concerned, Pradeep ji, and as far as Mr. INMDTLY is concerned, they are very clear. They are moving at breakneck speed. They are moving like a bullet train, which they are working on right now. And I tell you what, as far as Maharashtra is concerned, the real fruits of this development will be visible by the time we are in the second half of next year, because these two guys are not going to stop. मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को कोई विकास की यात्रा पर ये दोनों के दोनों जो चल रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर कोई रोक सकता है. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम.